University of Jammu and Kashmir. I have a bachelor's and master's degree in computer applications, and after that, I was working as a web developer for 3 years in Bangalore, where I was working with Thomson Reuters, and that's where I have inculcated these skills. Currently, I'm working full time with iQuizer. It's based in Washington, D.C. I'm currently working as a senior technical recruiter. So it's great to see all of you here. And then At the same time, this is a wonderful opportunity to talk with the people who hail from your society. तो कश्मीरियों के साथ आप जब भी बात करते हो, आपको मौका मिलते हैं, तो it's always a great feeling. And I would like to thank you everyone for joining this session. So today's session, like Nakshap told that we will we will be working, we will be learning a little bit about web page using HTML and CSS. So everyone would be aware about a website, and now that in the time we have grown up, it has taken a huge boom. So अभी जैसे 2000 से देखेंगे तो वेबसाइट्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है, जहाँ पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है, जहाँ पे बहुत सारा कुछ लैंग्वेज से इवॉल्व हुई है, दिन ब दिन लैंग्वेज से इवॉल्व हो रही है। तो उस वजह से हमें आसानी हो गई है अभी जैसे वेब डेवलपमेंट वगैरह ऐसे कुछ सीखना। So जो वेबसाइट रहती है, obviously everything which is on internet has been created by some language, be it a front end technology or be it a back end technology. So basically जो वेबसाइट रहती है इसमें भी हम कुछ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो first language which I would like to talk about is obviously HTML, and then we have a CSS, and these two are totally independent on each other. It's not like someone will understand HTML and then he will not know CSS and he can create a website. Never. So वैसे ही likewise, if you know CSS and you do not know HTML, uh, that won't get you anywhere, because these two languages are important to create a web page. तो पहले हुआ क्या करता था, पहले XML लैंग्वेज हुआ करती थी जिसमें हम डेटा स्टोर करते थे। उस लैंग्वेज से जब भी हमें रिट्रीव करना होता था कहीं वेब पेज पे, तो उससे हम रिट्रीव करते थे। तो अभी का जमाना जमाना वेबसाइट्स का है। आप देखते ही होंगे कितनी सारी वेबसाइट्स है। हर कोई जो भी मतलब ऑनलाइन शॉप हो, कोई कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी काम करते हो जो सर्विस सेक्टर में हो, उनका भी क्या रहता है कि उनकी एक वेबसाइट रहती है। और अभी के ज़माने में सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस होता होगा, कोई भी कुछ भी काम होता होगा, तो उसमें हम पहले उनकी वेबसाइट चेक करते हैं। तो इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी बिजनेस to have an online presence. And how we can have an online presence is obviously fundamentally we have this HTML and CSS language through which we can create websites and store them on a web server. So let's get started. I welcome you again to this session. So the intent is to make you understand something about HTML and CSS, and hopefully आप कुछ सीख के जाओगे इस सेशन से। हमारे पास 1 घंटा है। 1 घंटे में obviously we cannot understand HTML and CSS deeply, but I will try to make you understand how these languages work and how we set up writing HTML and CSS code. तो HTML और CSS या वेब डेवलपमेंट से पहले हमें जो चीज़ जाननी होगी उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर होस्टिंग। तो जब भी हमें कोई वेबसाइट बनानी है, जब भी हमें कोई वेबसाइट ऑनलाइन करनी है ताकि उसको दूसरे लोग देखें, तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली वी विल हैव टू स्टोर दोज फाइल्स ऑन ए वेब सर्वर। सो उस जो जगह हमें वेबसाइट मतलब उनकी फाइल्स जो हमें स्टोर करनी है, उसके लिए हमें एक होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, जहाँ पे मैं HTML CSS, obviously I will write a code in HTML CSS, and then those files I have to store somewhere on internet so that other people obviously now right now you are surfing Facebook, you are surfing Twitter, these files are stored somewhere, and when you put in these URLs in your browser, you are able to see those websites. So वो वेबसाइट कुछ नहीं होती है, वो फाइल्स रेंडर वो आपके ब्राउजर में
आपके कोडिंग के हिसाब बनती है आपके ब्राउजर में, तो आप देख पाते हो। फिर फेसबुक का अलग डिजाइन होता है, ऑब्वियसली हर किसी वेबसाइट का अलग अलग डिजाइन है। तो वेब होस्टिंग जो है वहाँ पे हम फाइल सेव करते हैं, जो हम HTML एंड CSS कोड लिखते हैं वो हम फाइल सेव करेंगे वेब सर्वर पे। तो वेब सर्वर आप समझ लीजिए जैसा आपको एक मकान बनाना है, अगर मकान बनाना है तो मकान कहाँ पे बनेगा, वो ज़मीन पे बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें वेबसाइट बनानी है, उसके लिए हमें बनाने के लिए हमें कहीं पे चाहिए, ताकि हम वहाँ पे अपनी वेबसाइट्स की फाइल्स रखें, तो उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। So I do not know what's the background, what Excuse exactly me, are your background. Yeah. and I said one thing. Are you sharing, some information also with us? Some screens or some slides. Right now screen is Okay, on. I okay, okay. think that, yeah. ठीक ओके ठीक नहीं मैं सोच रहा था इन केस यू नीड टू जस्ट रिमाइंड मी Sure, I will take care of that. So team, here what I was trying to make you understand is the web hosting, the concept of web hosting. It's just the server, जैसे आपका कोई डेटा रखना होता है फोन में, आप कहाँ रखते हो, उसकी स्टोरेज में, फोन की स्टोरेज में। वैसे ही अगर इंटरनेट पे कुछ भी रखना है हमें, सो we will need a space to place those files, so that the other persons who will try to see that website, they will put that URL, and they will be provided by that particular files, obviously. So moving ahead in today's session, obviously the main contents we will talk about is a browser, and then we have hosting, server and domain. So browser क्या होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो, तो एप्लीकेशन एक मीडियम होता है। सो ब्राउजर इज ऑब्वियसली ए मीडियम थ्रू विच यू कैन रिट्रीव द फाइल्स फ्रॉम द सर्वर्स। हम अगर कोई वेबसाइट है, उसकी फाइल सर्वर पे है, तो अगर हमें वो अभी हमें देखनी है, तो हम क्या करते हैं, हम ब्राउजर पे जाते हैं, वहां पे हम URL टाइप करते हैं, तो हम जो ही एंटर दबाएंगे, वहां से हमें वेबसाइट एक खुलती है हमारे ब्राउजर में। तो ब्राउजर बेसिकली क्या है, ये एक मीडियम है जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स की फाइल्स देख सकते हो। तो ब्राउजर में आप जो ही URL टाइप करोगे, तो आप ब्राउजर में ही कुछ देखोगे। सो ब्राउजर इज बेसिकली द मीडियम, and then hosting is obviously where we will place the files we have of a particular website. सर्वर इज सेम। सो जो होस्टिंग होती है, उनके पास एक सर्वर रहता है, हम सारी फाइल्स उसमें स्टोर करते हैं सर्वर में। जब भी किसी को फिर देखनी होती है, वो वेबसाइट का URL दबाता है, वो और वो वेबसाइट देख पाता है। एंड देन वी हैव डोमेन। So domain is nothing but a name. So if we will talk about in a technical term, जो डोमेन होता है, डोमेन बस एक नाम है, ताकि आपको याद रहे डोमेन का नाम। वरना हर किसी डोमेन के पीछे एक IP एड्रेस होता है, हर किसी, जैसे फेसबुक का होगा, उसका होगा 180.0.0.82 ऐसे। तो अगर हमें वेबसाइट से याद रखनी होगी, हम ये जो IP एड्रेसेस है हम नहीं याद रख सकते। इट्स नॉट ए ह्यूमन टेंडेंसी टू remember each and every URL, or maybe an IP address. So for that reason, the internet service providers have come up with the idea that they will name this they will name these domain names. They will assign it to one IP address, and when someone is clicking facebook.com, it will take them to that particular website. So उस वजह से हम वो वेबसाइट ऑब्वियसली देख सकते हैं। तो डोमेन आप इतना याद रखिए कि इससे हम कोई भी वेबसाइट जानते हैं। अगर हमें फेसबुक नहीं पता होता, किसी को याद नहीं रहता कि हमें फेसबुक टाइप करना है, उसके बाद हमें फेसबुक मिलेगा। तो इसके लिए हमें डोमेन नेम सर्विस है, वो हर किसी डोमेन को एसोसिएट करती है एक IP एड्रेस के साथ। उसके थ्रू हम जो ब्राउजर में हम वेबसाइट देख पाते हैं। या ये जाहिद साहब इनायत साहब कैन यू शेयर दिस एग्जांपल आल्सो कि डोमेन और उसमें क्या डिफरेंस है some example on the from the browser. obviously give me a second. Right, it's तो visible.
तो अगर हमें अभी फेसबुक सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक टाइप करूंगा, ये जाएगा यहाँ पे असली। लेकिन जो डोमेन का जो पीछे से एक आईपी एड्रेस होता है, हम आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक करेंगे सर्च, फेसबुक। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये फेसबुक का आईपी एड्रेस है। हमें वरना ये याद रखना था जो आईपी एड्रेस है, हमें वरना ये याद रखना था हमेशा के लिए जो फेसबुक का 69.63.181.15। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके साथ एक नेम एसोसिएट किया गया है, डोमेन नेम। हम क्या करेंगे, अगर हम ये यूआरएल यहाँ पे सर्च करेंगे तो इट शुड टेक अस टू द फेसबुक होम पेज। तो इन्हें सब सॉरी, ये या जो पेज है ना जो आप शेयर कर रहे हैं ना, ये विजिबल नहीं है। गूगल का फ्रंट पेज विजिबल है, फेसबुक जो अगर कुछ लिख रहे हैं ना आप, दैट्स नॉट विजिबल। आप ऐसा कीजिए, काइंड ऑफ लाइक, यू पिक वन वन ट्राई शेयर तो पे। आप देख पा रहे हो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ कुछ? नहीं नहीं, वी कांट सी दैट, वी कांट सी दैट। आप नो इशू, वी कैन स्टॉप द स्क्रीन एंड देन वंस अगेन डू दिस, डू द वन सेम सेकेंड, वन थिंग। सेकेंड। Okay, now it's yeah, now Can we you can see that. can you Absolutely, can we see can the see that. screen? Yeah. So what I was trying to say is that if we have this Facebook domain name or not, let's not take the example of domain name Facebook. We will take the example of Google. So Google is obviously it's very hit. Everyone remembers that there is a domain name called Google. So what you will do is you will go to the browser and you will type and hit Google and it will give you the Google website. So अगर हमें domain name service का concept नहीं होता, हमें हमेशा इसका IP एड्रेस जो इसका respective IP एड्रेस होता, हमें वो टाइप करना होता, तब हमें Google आता. So basically this domain name service help us to remember these domains, so they will give it a name. So we किसी human tendency, जैसे human tendency होती है कि हमें numbers उतने अच्छे से याद नहीं रहेंगे, but when it comes to any word, when it comes to any brand name, उससे हमें याद रहेगा obviously जो वेबसाइट का जो नाम होगा, उससे हम वहां पे पहुंच सकते हैं. And Let me it's a, and share. अगर जब हम कहते हैं ना कि Kashmir Education Initiative, for example, our website is there, so that means Kashmir Education Initiative is a domain name, right? Yes, Kashmir Education Initiative is a domain name. Right, right. Behind that domain name there is an It is the IP IP address address. to which it will Absolutely. go exactly. Okay, So absolutely, give me a absolutely. second. All right, so now we have understood browser, we have understood hosting, we have understood server and domain, what these concepts are. So we can move forward and talk about HTML language. So HTML language is nothing but a markup language. अगर आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जो ये इमेज वगैरह है, जैसे ये इमेज है, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे नीचे थोड़ा टेक्स्ट है, ये लिखा गया है HTML से. और जो जो हमें इसका जो स्टाइलिंग है, जैसे गूगल यहाँ पे कलर्ड है, इसका साइज इतना है. व्हेन वी टॉक अबाउट वेब पेज, सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल. तो हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो ऑन डिस्प्ले वी हैव पिक्सल, सो वी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल. वी मेक श्योर दैट everything is center aligned, what we need. This search bar is looking good, then these buttons are looking good, and then we have some links maybe we need to provide. So let me take the example of my website. So I have this website, it's called innoception.in. So when I am trying to hit it, what it will happen is it will give me the files of my website. I have hosted this website on hostinger.com. They are my service providers. तो उस वजह से क्या होता है कि जो जो जब जो ही मैंने innoception.in हिट किया, इसने मेरे जो होस्टिंग प्रोवाइडर है होस्टिंगर, उसमें मैंने फाइल्स रखी थी, उसने वो फाइल्स यहाँ पे रेंडर की, मेरे ब्राउजर में रेंडर की. उस वजह से आपको वेबसाइट दिखी. तो इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह है वो मैंने सेट किया है. जैसे यहाँ पे स्लाइडर होगा, यहाँ पे टेक्स्ट होगा, यहाँ पे बड़े 3 टेक्स्ट होंगे हेडिंग में, यहाँ पे फिर छोटे अक्षरों में टेक्स्ट लिखा होगा, फिर यहाँ पे बटन होगा. सो लेट मी ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन what website looks like if we talk about only HTML. Can you see the screen? The screen is visible, yeah. Okay. So here, if we look at the website, you can see that it's not looking good. No one would like to see this kind of a website. They will they will think that where we have gone, they will not
they will not be able to read the content on this website. So for that reason, it's my responsibility, it's developers responsibility to put each and everything in a place, so that if a visitor comes to your website, they are able to understand, they are able to grab the information which they are looking for. So अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का मतलब होता है कुछ इंफॉर्मेशन अपने विजिटर्स को देना. So obviously if you will have website, you will have a particular information on the website, and it's a responsibility of a developer to make sure that particular information, the content and the images which are on the website, they are they are looking good, they are able to understand the content which is on the website. So अगर हम ये website देखेंगे, ये ऐसी लगनी चाहिए थी. Here I am able to see the slider, I am able to see the text, I am able to see what are the services here which are being provided by this website. Then there is an about me section. तो ये ऐसे जब रहेगा, आपको समझ आएगा कि we are looking at a website. So if we talk about only HTML, here you won't be able to understand the contents on a website. तो HTML का काम क्या होता है, मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे मैंने इनसेप्शन लिखा है यहाँ पे जैसे मैंने मेन्यू बार डाला है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये अभी HTML में लिखा है. जैसे अब अगर मुझे इसमें स्टाइलिंग देनी है, अब अगर मुझे इसमें अच्छे से रखना है, मुझे अपनी वेबसाइट लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, उसके लिए मैं इसमें स्टाइलिंग ऐड करूंगा. मैं बोलूंगा इसको ये राइट में आना चाहिए, यहाँ पे जो ये इमेजेस नीचे आई है ये अच्छे से आनी चाहिए लेफ्ट में. उसके लिए मैं एक लैंग्वेज का यूज करूंगा जिसके बारे में मैं बात करता था, वो है CSS. So obviously this markup is has been written by HTML. So I will try to make you understand here. So this is the editor. So when you have to write the code of HTML and CSS, you will need an editor. अगर आपको ASP.NET में कोड लिखना है, आपको उसके लिए कोई कंपाइलर चाहिए. जैसे अगर आपने C लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, C लैंग्वेज के बारे में आप C लैंग्वेज लिखने के लिए आपको चाहिए टर्बो C कंपाइलर. वो आपको रन करेगा सी का कोड और आपको दिखाएगा कोई रिजल्ट. ठीक है. वैसे ही अगर हमें जावा लिखना है, तो उसके लिए जावा का कंपाइलर हमें चाहिए. .NET के लिए हमें विजुअल स्टूडियो चाहिए. तो HTML और CSS एक ऐसी लैंग्वेज है, आपको ऑनलाइन एडिटर्स मिलेंगे. जैसे W3 स्कूल का ऑनलाइन Yeah, W3 please go ahead. स्कूल का W3 school का online editor है. Here what you will be able to do is you will be able to write an HTML code, and then you can write an CSS code there, and it will show you what you are doing. So if I will change my first heading here, its content, I will change it to hello world, and I will run. See. It's just waiting. So if I am making any change here to the HTML code, it will reflect right away. So I do not need to install any software to run the HTML or CSS code. I will be able to find a lot of HTML editors which are easily available online. You can go there and you can practice your code. So while talking about HTML, obviously it's a structured language. एक structure आपको फॉलो करना पड़ता है. जब आप वो फॉलो करोगे, वो एक स्टैंडर्ड होता है जो जो W3C ने सेट किया हुआ है. तो उनके हिसाब से हमें फॉलो करना है एक स्ट्रक्चर जो HTML का होता है. सो ऑब्वियसली द फर्स्ट टैग वी विल टॉक अबाउट इज द HTML. जो भी कुछ हम लिखेंगे, HTML का कोड जो भी कुछ होगा, वो हम रखेंगे HTML टैग्स में. जो भी हमें कुछ भी कोडिंग लिखनी है HTML की, वो HTML में आएगी. उसके बाद हमारा होता है हेड सेक्शन. हेड सेक्शन इज देयर. ये हेड सेक्शन में हम क्या करते हैं, ये जो टाइटल एक टैग होता है, ये आता है आपके ऊपर. जब आप जैसे जैसे आप 1 सेकेंड, जैसे आप यहाँ पे गिव मी अ सेकेंड. ऑलराइट. जो हम बात कर रहे थे HTML और CSS टेक्स्ट एडिटर की. 1 मिनट यहाँ पे. So, Inayat sir,
टू बी Yes. कंसिडर्ड, जैसे लैंग्वेज में होता है ना, लैंग्वेज में होता है ग्रामर। सो ये प्रेजेंटेशन का काइंड ऑफ लाइक सीएसएस इज वर्किंग इन एक्टिंग एज अ लाइक जो भी हमारा टेक्स्ट आता है इस पे प्रेजेंटेशन को स्ट्रीमलाइन करता है, राइट, सीएसएस। यस। तो अगर आप जो बेसिकली HTML का जो कॉन्सेप्ट है, HTML का जो भी हमें टेक्स्ट रहता है यहाँ पे, जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है, जो भी हमें इमेजेस डालनी है यहाँ पे, ये हम HTML से लिखते हैं। सो when we follow the coding, when we follow the structure of HTML, we will be able to put these text in that particular language. And then अगर हमें इसको स्टाइल करना है, कैस्केडिंग CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसका किरदार ये रहता है कि अगर हमें स्टाइलिंग इसकी करनी है, जैसे मैंने इसकी स्टाइलिंग की है, इसको मैंने सीधे तरीके से रखा है, तो हम क्या करते हैं, हम हर किसी एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे वो समझ आएगा जब हम एडिटर में, एक सेकेंड यहाँ पे, just give me a second. Yes, here। राइट। तो जो जो हम HTML और CSS है, HTMल का कोड यहाँ पे है, अभी यहाँ पे CSS का कोड हमने कुछ भी नहीं लिखा है। हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसको समझा रहे हैं, ये HTML का कोड है। उसके बाद एक हेड टैग है, हेड टैग में हमारा आता है टाइटल, जो आप URL के ऊपर देखते हो यहाँ पे, जैसे इसको है ट्राई इट एडिटर v3.6। ये हम यहाँ पे जब टाइटल टैग में रखेंगे, ये ऊपर आएगा। इससे हमें समझ आता है कि पेज का टाइटल क्या है, व्हाट दिस पेज इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन वी विल बी एबल टू फाइंड इन दैट पर्टिकुलर। टाइटल का मतलब ही होता है, पेज टाइटल का मतलब। तो हेड में हम क्या करते हैं, हम CSS का स्टाइल टैग यूज करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे, जैसे हमें HTML में एक टैग किया है H1, अगर हम यहाँ पे H1 यूज करेंगे, H1 का हम इसको बोलेंगे फॉन्ट, फॉन्ट कलर हम जैसे लिखेंगे रेड जैसे, वन सेकेंड। सो बेसिकली जब हम HTML का कोड जब भी लिख रहे हैं, तो वी आर putting some tags in that particular document. So H1 का टैग, H1 का हेडिंग 1, इसका मतलब है ये बड़ा आएगा, ठीक है। ये इसका जो डिफॉल्ट जो इसकी फॉर्मेटिंग होगी, वो ऑब्वियसली ज्यादा फॉन्ट साइज में दिखाएगा। जैसे हमें फिर पैराग्राफ जो भी हम लिखेंगे, यहाँ पे हम दूसरा पैराग्राफ ऐड करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा पैराग्राफ ऐड करेंगे। इफ आई विल राइट है my name, it will come here. So here we are providing the content which is to be shown on a website, ठीक है। तो अगर मैं उसके बाद एक जैसे लिस्ट आइटम, हमें कुछ लिस्ट आइटम होता है, जैसे दो चार चीजें हैं वो हमें दिखानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका पहले होता है UL, one second, UL, and then we will provide list items, list item 1। सी, अगर हमें लिस्ट आइटम देना है, तो हम क्या करेंगे, हम LI एक टैग आता है, उससे हम लिस्ट आइटम डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। आपने देखा होगा काफी सारी वेबसाइट्स पे वहां पे लिस्ट दिए होते हैं। तो तो बेसिकली हम यहाँ पे HTML जो डॉक्यूमेंट होता है, हम यहाँ पे जो भी हमें कंटेंट दिखाना होता है अपने वेब पेज पे, हम वो सारा इसमें लिस्ट करते हैं। जैसे हमें अगर अब इमेज कोई हमें दिखानी होगी, इमेज, सी,
if we have to include the image on our web page, what we will do is we will use the image tag. Img tag is a tag which will help us to include image on a web page. So here what we do is uh, we give him a source, image का source वो कहाँ पे हमने रखी है. All tag is what if image is not able to render on a web page, it will show girl in a jacket. So हम इसको बता रहे हैं width अगर हम यहाँ पे change करेंगे, width इसकी 300 ही होगी, तो it will reduce the width of this particular image. तो इमेज टैग से हम इमेज इंक्लूड करते हैं, ऐसे बहुत सारे इमेज. इसके बाद हमारा फॉर्म रहता है. अगर आप वेब पेज पे एक फॉर्म देखते हो जहाँ पे आप अपना नेम, जहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देते हो, कोई इंफॉर्मेशन होती है वो देते हो, तो उसके लिए हमें आता है एक फॉर्म टैग. फॉर्म टैग से हम एक फॉर्म बनाते हैं, उसमें हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है यूजर से जो हमारी वेबसाइट पे है, उनसे हम वो इंफॉर्मेशन लेते हैं. सो बट basically I'm trying to make you understand is that if we have to if we have to show anything on our website, we will write that using the html. html is the language which will help us write those. Basically अगर आप वेब पेज देखोगे, वेब पेज में क्या होता है, वेब पेज में इमेज होती है, वेब पेज में कंटेंट होता है, वेब पेज में टेक्स्ट होता है, वेब पेज में आपको वीडियो होता है. तो वो सारा हम इंक्लूड करते हैं एक वेब पेज में हम यूजिंग द HTML लैंग्वेज. और फिर CSS का किरदार कहाँ आता है अगर हमें अब स्टाइल करना है. if we will talk here, we will include the head section. Give me a second. सो दिस HTML का जो हेड होता है, यहाँ पे अगर हमें कोई CSS फाइल लिंक करनी होती है अपनी वेबसाइट में, हमें कुछ टाइटल देना होता है हेड सेक्शन में, हमें कुछ इंक्लूड करनी होती है एक्सटर्नल फाइल्स है, वो हम सारा कुछ हेड में इंक्लूड करते हैं. और obviously the body is where we will put the main content of our website. तो head section में usually what we will do is we will provide the information about our website, about our web page. And body section is where we will write the content which is to be shown on a web page. So if we will go back to the previous slide here. So HTML का जैसे मैं आपको बता रहा था, HTML जो HTML लैंग्वेज है, इसमें हमें एक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ता है कि एक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कोड लिख रहे हैं. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पहले हमें HTML टैग से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद हम हेड सेक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम बॉडी लिखते हैं, बॉडी में हम जो भी हमारा कंटेंट होता है वो आता है. तो and we were talking about CSS. CSS is obviously something I told you that using CSS we style our website. HTML से हम कंटेंट डालते हैं, CSS से हम कलर देंगे, उसमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, इमेज को हम कोई डिजाइन देना होगा वैसे. हम उसके बाद क्या करते हैं, CSS से basically every styling which is happening. So if you will see something, if you will see these things happening on website, you will see styling. आप यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे रखा है 6 चीजें, ऊपर तीन कॉलम बनाया है हमने, फिर हमने इमेज रखी है यहाँ पे, इसके नीचे टेक्स्ट, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इससे बड़ा है. तो this each and everything we take care using CSS. So if I will go here, I will change the CSS of this particular element. I will write font size is equivalent to 40 pixel. It will increase the font size obviously. So here they have used the font size 18 pixel here. So what basically I'm trying to understand is that using CSS we are styling each and every element we have firstly written through HTML. So if we have written something through an HTML, that comes on our website, and then using CSS what we do is we style our web page. So going back to this, so HTML के बारे में हमने इतना सोचा कि I want you to understand this is that HTML से हम कोई भी टेक्स्ट लिखना होगा हमारी वेबसाइट में, कोई भी इमेज इंक्लूड करनी होगी,
कुछ भी जो आपको वेबसाइट में दिखता है वो हम HTML से पहले लिखते हैं, एंड देन यूजिंग द CSS व्हाट वी डू इज वी स्टाइल आवर वेब पेज। अगर CSS, अगर वेब पेज में हमें कोई डिजाइन चाहिए, हमें कुछ अच्छे से रखना होगा वेब पेज में कोई, व्हाट वी डू इज वी स्टाइल यूजिंग CSS। एंड देन Bootstrap is a language, it came into evolution when Twitter was building its website. So Twitter जब काम कर रहे कर रहे थे अपनी वेबसाइट पे, someone in Twitter they come up with an idea that they kept the CSS written, already written. So उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई, जो सारा CSS कोड है उन्होंने एक फाइल में लिखा, और वो फाइल ओपन सोर्स किया, हर किसी के साथ वो फाइल शेयर की। उससे क्या हो गया, मतलब अगर मुझे अब CSS यूज करना होता तो मैं वो फाइल यूज करूंगा। आप किसी में भी जाओगे, जैसे हम अपनी वेबसाइट में यहाँ पे जाएंगे, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, इतनी देर में किसी सो का कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है? इन सब लेट मी टेक सम क्वेश्चंस, अगर जब तक आप श्योर, शेयर करेंगे। if you are सो not able to understand, I can make some change to, so that you will be able to understand what I'm trying to make you understand. इस टॉपिक Anyone के has any रिलेटेड एनी question? क्वेश्चन, एनी कमेंट और एनी क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखें, और इफ यू थिंक इट्स अर्जेंट दैट काइंड ऑफ लाइक यू कैन रेज द हैंड एंड वी कैन टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन। कोई सवाल है किसी के जहन में आ रहा है इस टॉपिक के रिलेटेड, या अगर कोई कंफ्यूजन है? ओके, सो नाइस, सो इट सीम्स इट्स ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। If anyone has any question, they can unmute the mic, or they can paste their question in the chat box. I will take those questions accordingly. So I was talking about Bootstrap. तो Bootstrap एक ऐसी language है, uh, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिन्होंने प्री डिफाइंड, उन्होंने फाइल्स में लिख कर रखा जो हम CSS लिखते हैं। उस वजह से, जैसे कोड reusability, you know how important it is. If someone has written any code, the other people who are working on the same code, they can reuse that code. They don't need to write that code from the scratch and then use that in their website. So Bootstrap came up with an idea. They kept the CSS written on files, and then they shared, made them open source, so that everyone will be able to use those files and make a change in their website. So अब अगर हम यहाँ पे देखें अपनी वेबसाइट में, हम इसका कोड देखेंगे। Here, see, this is the code of our website. So here, what I was trying to make you understand is that each and every code of HTML will be enclosed in HTML tag, and then after that we have an head tag. Here इन हेड टैग, ये यहाँ तक है हेड टैग। हेड टैग में हम क्या करते हैं, हम जो फाइल्स होती है लिंक करती है, जैसे मैंने इसमें फॉन्ट एक यूज किया है एसजार। एसजार एक गूगल फॉन्ट है, मैंने वो इंक्लूड किया है, वो मैंने हेड में किया है, ठीक है। तो मैंने इसमें जो आइकन्स है वो, उसके लिए मैंने इनकी लाइब्रेरी यूज की है, आईकॉमन की। एंड देन आई वाज टॉकिंग अबाउट बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप अगर हम देखें, एक मिनट यहाँ पे दिक्कत आ रही है मुझे, मे बी हाइड दिस, ये कुछ कहीं से हाइड वीडियो पैनल, ओके, ये दिक्कत दे रहा है, वहां पे मैं टैब स्विच नहीं कर पा रहा हूँ। इज दिस ओके? ऐसे ठीक है अब? बिकॉज आई एम आल्सो कंट्रोलिंग दिस सेशन फ्रॉम माय साइड, तो मैंने इसको डिस्प्ले को ऐसा भी I'm जस्ट I'm not able to switch my tabs here. okay. So then you have to basically, what I will suggest, stop the Mm-hmm. share screen, then reconnect once again. Stop the share Yes. screen. अच्छा, और ये सवाल जो अभी आया था ना इसके, like we have to see two questions. One is about how to give color to them. तो Sir, color see your और जो chat box. So we have not taken the questions. There are a lot of questions. We will take these. What is the जी grid system? This has been asked by Gohar Ahmad Loan. So grid system is basically some, see here. Uh, in a uh, summer there's one thing, sorry, in a yeah, one thing जो असल में अच्छा ये रहेगा that right from the we first will day, take the क्योंकि questions. हाँ,
we will take the questions, those which are we discussing them, those which are being discussed in this session. क्योंकि ये This is टॉपिक, ये थीम इतने बड़े हैं, तो if we start, ये जो ग्रिड का भी जिक्र ही नहीं हुआ कहीं पर. So if we take this, then entertain this question. So ये discussion पता है कहाँ पे चला जाएगा. So so we will take these questions maybe little later. At first, we will try to make a web page so that you will be able to understand how we write the code in HTML. ठीक है? And then we will take this the spelling of maintenance on your website is incorrect. Thank you so much whoever has brought this question. uh, sure, we will take I can see a lot of questions there. I will take these questions accordingly at the end of this session. At first we will follow our presentation. So bootstrap, आप इतना याद रखिए कि bootstrap एक framework है. ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो हमें जिससे हम अपनी वेबसाइट में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं. उस वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो रेस्पॉन्सिव बनेगी. हेयर so we will take this bootstrap. Give me a second. So bootstrap is a HTML, CSS and JavaScript library. Yeah. So you're sharing screen. अभी हो गया आपका, क्योंकि you have stopped the screen. Now you have to share it once again. Sorry, I do not know Change how it. this This works here. happens. Click once again the green button on the bottom. Yeah, now it's coming up. Up होगा. You are We can able see. to see which screen here Yeah, we can see the screen. or The Google. presentation? No, the Google screen. You're scrolling it up. We can see that. Okay, now it has again stopped. Yes, अभी yes, रुक गई yes. है. Okay, now it's again coming up. Okay, now this is a PPT. Presentation is there. All right, so presentation is here. All right, so I think that I have made you understand the structure we have to follow for to write the HTML code. So obviously, like I was saying from the very first go, that HTML tag होता है, हम उसमें head section में हम title देते हैं. कोई external file हमें link करनी होगी वो हम link कर सकते हैं. उसके बाद हमें body में जो भी हमें content होता है, जैसे h1 tag, एक h1 tag है उसमें हम hello world लिखा है यहाँ पे, तो ये h1 tag से हमें थोड़ा सा बड़ा दिखेगा. और paragraph tag would be the normal text. So this is mainly the structure of the HTML which we have to follow in order to make the browser understand that this is an HTML file. If we made any mistakes while writing the HTML code, it will obviously not render properly. So we have to take care of the structure. We have to make sure that we are structuring the HTML code in a proper way. So after that, if see here we have used h1 tag, I have used p tag here, and we have this body tag here. So using CSS, we have to take control of these tags. So मैं CSS using CSS क्या करूँगा, हर कोई element जो भी मैंने HTML से लिखा है, जैसे just यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे CSS की. So if I have written anything, if I have written anything in HTML, any tag in HTML, I will select that tag and I will make some change to that tag. So here, see, here we have used h1 tag. This is a heading, this is a paragraph, it's in p tag. So in style what we will do, body को हम इसको बोल रहे हैं कि हमें background color चाहिए powder blue, and then h1 tag का color आना चाहिए blue, and then p का color आना चाहिए red. So if we will try to look, what we have written here is, जो बॉडी है, बॉडी से सारा है, ठीक है, बॉडी का जो सेक्शन है वो सारा है. एंड देन वी हैव h1 टैग. h1 टैग को हमने इसको बोला है कलर ब्लू. अगर हम यहाँ पे ग्रीन कलर इसको बोलेंगे करने के लिए, इट विल मेक इट ग्रीन. सो वी आर कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग हेयर. सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें पहला जो, जैसे वेल व्हाट वी विल राइट इज वेलकम टू आवर वेबसाइट. Here
and then we will write anything else, like we will write this is our website. So if someone wants to make the color of this body black, he can make the color of the body black. So what I'm trying to make you understand is that we are controlling each and everything I am writing here. So with HTML, I wrote the text. If I have to include the image, I will write the image tag and I will give it the source. I will give it the source and it will bring me an image here. So what I am trying to make you understand is that it's up to me what is the content I will paste, how what is the text I will I would love to see on my website, what are the images, what are the different sections I want on my web page. And then using the CSS, what I will do is I will make the uh, फॉर्मेटिंग चेंज टू माय वेबसाइट. जैसे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया, अभी हम इसका कलर ग्रीन दे रहे हैं. सो जो भी हम HTML में कोड लिख रहे हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं CSS के साथ. CSS से हम उसको बोलते हैं कि वो कैसा दिखना चाहिए हमारे वेब पेज पे. ठीक है. तो हम उसके बाद हमने बात की बूटस्ट्रैप की. बूटस्ट्रैप में हमने ये सारा CSS ऑलरेडी लिखा हुआ है. ठीक है. तो बूटस्ट्रैप से हम यूं ही वो इंक्लूड करते हैं बूटस्ट्रैप की फाइल हमारे अपने वेब पेज में. उससे हम वो सारा कोड हमारी वेबसाइट में आता है. तो हम उसके बाद उसकी क्लासेस यूज करेंगे. सो if I will write here call md4, it will make 4 columns. There was a question, what is the grid system? Here I can answer it is like, when we are talking about website, the standard is that we are saying that there are 12 columns. There are 12 columns in a website. So grid system से हमें ये फायदा मिलता है कि हम हर किसी कॉलम हमें जैसे यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए अलग, दूसरे 2 कॉलम में अलग से कंटेंट होना चाहिए. So this whole web page is a 12 column based website, and then it's up to us which column we want to take and what we want to keep there in that particular column. तो grid system to बूटस्ट्रैप से हम easily access कर सकते हैं. हम इसको आराम से बता सकते हैं कि how many columns we need for what particular section. And in answer, there is a similar question that question is asked that why should we have multiple languages? Like it's very, I mean, why create 2 different languages for? I mean, it's asked by Zaim. तो actually basically simple. तो आप ये बता दें इनको. So I could have ठीक. answered. So basically, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि if we are learning any language, if you are learning any language like Java, you will be able to write code in Java, and then you can create an application. And if you are if you have to create any other application, you can use a number of languages to create that particular application. But when it comes to website, here using HTML, we write the text and we write the image we want on a web page. And then using CSS gives us the leverage to make formatting change to the website. तो अगर हमें कुछ formatting जैसे color देना होता है, जैसे हमें कुछ left लेना होता है, जैसे हमें कुछ right लेना होता है, कहीं पे ज्यादा space देनी होती है, वो हम कंट्रोल करते हैं using CSS. So HTML and CSS are both used to create a website. So someone cannot learn the HTML and create a website. He has to know the CSS so that he can make the styling change to that particular website. Yes. Right, I right. hope this has answered your Absolutely, yeah, that was okay. And then question. there's basically, in answer, there is one thing more. When you are creating an HTML page, so and then later CSS page. So are there these tags, mentioned somewhere in the, like Tabish was mentioning last time. So so that I can get all the commands. You mentioned H1, you mentioned P. So all those Yes. things. Is it somewhere so that we can copy it, and then if in case someone from the session wants to create Uh-huh. his
website, then he can use the tags. Is it Sure, available? sure. Yes, it's always available, and with HTML and CSS, it's abundantly available. So Mhm. there are a lot of online resources where you will be able to find the information. You can actually learn the HTML and CSS. And one of the website I would recommend you guys is the W3 schools. Here you will find information about each and every type tag, or maybe the keyword, or maybe the selector. You will be able to find each and everything. So जैसे जैसे यहाँ पे elements है HTML के. So tag name is one element, and then like we were talking about, H1 tag is there. We have the paragraph tag here. And then attributes, if we will talk about here, we can if you want to keep a link on your website. So basically, अगर आप कोई लिंक होती है आपकी वेबसाइट पे, आप चाहते हो कि ये लिंक मुझे किसी और वेब पेज पे ले जाए, तो what we will do here is we can write, this is a Facebook. Facebook. See, here we kept the name of the link Facebook. If we will click here, it will take us to the Facebook. So what I am trying to say, make you understand here, is that anchor tag is used to link any text to any link. So अगर मैं यहाँ पे और कोई लिंक, जैसे हमारी सोशल लिंक्स होती है यहाँ पे, हम जैसे मुझे 3-4 लिंक्स देनी होगी, लिंक्डइन इज देयर, वी हैव ट्विटर, जैसे हमें सोशल लिंक्स देनी होती है, यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली इनके यूआरएल चेंज करूंगा. जो हमारा ट्विटर का लिंक होगा, twitter.com, and then we will have this LinkedIn, जैसे linkedin.com होगा, linkedin.com. If we will run it, we will have these links. If I will press on any link, it will take me to that respective social media website. ठीक है, तो उसके Sir, बाद हम, yes, sir, उसके, but there is one thing more I just want to add here. अगर हमारे इस yes. ग्रुप में किसी स्टूडेंट ने कोई वेबसाइट बनाने की ट्राई की है और हैज ऑलरेडी सक्सेसफुली डन दैट, इज देयर एनीवन? तो वो रेज अपना हैंड करें so that we can get their views as well. I remember in the previous session, we had one student get already worked on it, and then If first Shabir has raised his hand, maybe she has a question. Can you please take that? yeah, sure. इफ़त अपनी माइक को अनम्यूट करो and then speak out. अगर आपने बनाया ना सर ये परसों वेबसाइट, सर परसों ताबिश सर ने बोला था ना, होमवर्क दिया था ना, तो जी इसी रिलेटेड बनाया आपने? ओके, यू रिज्यूमे, created? जी जी रिज्यूमे वंडरफुल, बोला था बनाने के लिए बाय दिस, राइट, तो वो बना है. बनाया आपने, ठीक है. So we will be discussing that in the next session. And Amar, what about you? So yes, sir, I have worked before on HTML, Okay. and Right. then after the WordPress भी मैंने काम किया था, और परसों जो वो रिज्यूमे वगैरह बनाने के लिए था वो भी मैंने बनाया. ठीक, wonderful. That's great. So you have understanding about WordPress. That's really nice. We will talk about content management systems as well. And Nasir, So there is Nasir also. Nasir, what about you, Nasir? ये सर जो हमने जाहिद सर ने रेज्यूमे का बोला था HTML की, ये लाइक वेब पेज के ठीक, साथ आपको रेज्यूमे ठीक, बनाना है, उस पे मैंने काम किया था. ताबिश सर, ठीक, ओके, गुड, ताबिश सर ने, हाँ. थैंक यू, ओके. So if anyone has any questions related to HTML and CSS, we will take it accordingly. We want to make sure that we finish this slide and we are able to cover the contents of this presentation. ठीक है. So after that, I was talking about, firstly, we were talking about the resource. Obviously, we were talking about the W3 school. It has each and every information about the elements we use, how we write the syntax of HTML. So you will find each and everything here in this W3 school website. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सारे कोर्सेज है. जैसे आप यहाँ पे HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python भी देख सकते हो. But if you want to learn HTML and CSS, you will have to go through each and every element. Here you will be able to find the meaning of each and every tag so that you can basically create a website. Here we do not have chance to talk about these tags separately. It will take a No, but lot this of is time.
Yeah, but this information is very critical because so that हमारे पास एक resource है अब, so we can just copy paste and then you kind of like format it our page accordingly, जो भी हमको चाहिए, attributes, heading, boxes. So now this Yes. information is very critical. Right. And guys, so we were talking about, so वेबसाइट बेसिकली क्या रहती है, उसमें कंटेंट रहता है, उसमें इमेज रहती है, इमेज को हम छोटा बड़ा हम सर्कल उसमें करते हैं, कुछ डिजाइन पेश करते हैं, तो वो वेबसाइट पे रहती है ओब्वियसली. एंड देन टेक्स्ट में हम बहुत सारी कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम टेक्स्ट के साथ बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं यूजिंग CSS. हम एक प्रेजेंटेबल वे में अपने कंटेंट को पेश करते हैं हमारी वेबसाइट पे, ताकि जो लोग हमारी वेबसाइट को देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगे पढ़ना देखना, so that we retain a visitor on our website. So image, obviously we have colors, we can use the RGB colors, we can use the hexadecimal code to identify the colors, and then we have a number of fonts as well. So there is a huge variety of Google fonts. They are open source font. You can use those Google fonts which are available, which have been made available by Google. So hum font bhi, so here if we will talk, here is web content is textual, visual, oral content that's encountered as a part of user experience on website. It may include among other things text, image, sound, video and animation. So basically यही चीजें होती है हमारे वेब पेज पे, जिसको हम अलग अलग तरीके से फॉर्मेट करते हैं और अपनी वेबसाइट पे पेश करते हैं. To change the color of any text on the page, first find the tag responsible for styling that text, then go into the style sheet and modify the corresponding class or create a new class. So here basically what we are talking is that if we have to make change to any tag or maybe element which we have written in HTML. So firstly we will have to recognize, see जैसे यहाँ पे हमारे पास अभी दो एलिमेंट है, यहाँ पे जैसे जैसे हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे, ordered list, we will तो आ गया. ठीक है, अभी हमारा जो वेबसाइट है, ये जैसे हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हमने ऊपर में टेक्स्ट लिखा है, ये हमने लिखा है यूजिंग दिस H1 टैग. सो हम इसको बता रहे हैं H1 टैग में द IMG एलिमेंट, उसको खुद ही समझ आएगा कि मुझे इसका फॉन्ट साइज बड़ा करके देखना है, बिकॉज इट ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स दिस H1 टैग, ये बड़ा होना चाहिए. हमारी टैग अब हम अगर देखेंगे, हेडिंग्स जो होती है H1, H2, H3, H4 एंड H5, तो हम अलग अलग से अगर हम H1 यहाँ पे चेंज करेंगे H2 में, 1 सेकेंड, H2 में, इससे क्या होगा, हमारी जो दूसरी हेडिंग आएगी वो छोटी से आएगी, सी. अब अगर हम ऐसे ही H3 में चेंज करेंगे, वो अलग अलग डिजाइन में आएगी. तो मतलब मेरा कहने का ये है कि हमारे पास जैसे अभी 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स है, तो what we have to do is we have to recognize which particular element we have to make change to. Okay, so here we have this H1 इसको हम एक क्लास देंगे, it's an heading. ठीक है, हम हमें कुछ चेंज लानी है हेडिंग को, जैसे हमें इसका कलर करना है, कुछ रेड करना है इसका कलर. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हेड में जो भी स्टाइलिंग है वो हम हेड में जैसे अभी के लिखेंगे. बहुत तरीके होते हैं स्टाइलिंग लिखने के, जैसे हम CSS कोड एक एक्सटर्नल फाइल में लिख सकते हैं और वो फिर हमें हेड में इंक्लूड करनी है, या हम हेड में सीधे स्टाइल लिखेंगे. हमने यहाँ पे क्लास, तो क्लास हम डिनोट करते हैं डॉट क्लास से. ठीक है, तो डॉट क्लास को हम इसको बोलेंगे कलर कर दो जैसे ग्रीन. ठीक है, सो हेयर व्हाट वी हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, जस्ट गिव मी, स्पेस का होगा कुछ. नहीं, स्पेस का नहीं है, वी हैव टू यूज द स्टाइल टैग.
ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो जो ये H1 हेडिंग है इसको मैंने एक क्लास दिया। मैंने अब अगर क्लास से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने H1 को भी क्लास हेडिंग दिया है, मैं ये क्लास LIOL को भी दूंगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसको इसको पता चला जो भी जिसका भी क्लास हमने सेट किया है हेडिंग, उसका आप क्या करोगे, उसका कलर आप ग्रीन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे ग्रीन कलर। सो मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट को चेंज लानी है, हमें उसको पहले रिकॉग्नाइज करना है। हमने हमने देखा कि हमने अभी इस पर्टिकुलर टैग को चेंज करना था। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको एक क्लास एसोसिएट किया, उस क्लास को हमने इसको बोला कि इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दो। अब हम अगर जो ये क्लास हेडिंग, अब हम अगर किसी भी एलिमेंट को एसोसिएट करेंगे, उसका भी कलर क्या आएगा, ग्रीन। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा ओ टेक्स्ट लिखेंगे, थोड़ा ओ टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे जैसे दिस इज ए पैराग्राफ, पैराग्राफ है। सो आ गया। अभी ये सीधे किस कलर में आ रहा है, ये आ रहा है ब्लैक कलर में, बिकॉज दिस इज अ डिफॉल्ट कलर। सो इफ वी हैव टू मेक color change, or maybe give padding, let's not only change the color, we will use the class paragraph, para. All right, so if I have to put some space in front of it, what I will do is will have to use this class dot para. With dot, it means that we are using a class. Dot para, I will write padding left 30 pixel, for example. So what will happen, one second. So this is a case sensitive, we have to make sure that we follow the, see here we are able to see the padding right now. So what I have done is, मैंने एक recognize किया एक element, मैंने इसको बोलना है मुझे इस element को change करना है। इस element को change करने के लिए मैंने इसको एक class associate किया, जैसे मैंने यहाँ पे para एसोसिएट किया। अब मैं स्टाइल, जब मैंने इसको CSS, जब मैंने इसके लिए लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पैरा क्लास को यहाँ पे डिफाइन करूंगा। यहाँ पे बोलूंगा जो, जैसे मैंने अब यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, पैरा क्लास मैंने डिक्लेयर यहाँ पे किया। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर जैसे। उससे क्या होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इससे क्या होगा, ये सेंटर में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आई एम trying to format these elements I have written through HTML. तो HTML से मैंने ये elements, जितने भी element मैं यहाँ पे जितने भी elements मैं यहाँ पे यूज करूंगा HTML से, उस CSS से मैं हर कोई element कंट्रोल करूंगा, हर किसी एलिमेंट का क्लास एक डिफाइन करूंगा, उसको फिर अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग चेंज करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद लेट्स मूव बैक टू दिस। सो मेरा कहने का गर्ज यही था कि हम बहुत सारी चेंज ला सकते हैं। वी कैन मेक huge number of formatting to any element which is placed on a website. ठीक है, तो अब अगर हमें कोई भी वेबसाइट हम अगर देखेंगे, इसका कोड कितना आपको मुश्किल लगता होगा। ये कोड आपको जहाँ शायद अभी मुश्किल लगता होगा, बट इफ यू विल टेक ए little bit deep peek into this code, it's not that complicated to understand. See, right now we understood that this is a structure. So एक HTML का एक HTML tag रहेगा, फिर head रहेगा, उसके बाद body रहेगी, उसके बाद अलग sections रहेंगे। So अब अगर हमें ये वाला कोड, ये ऐसी वाली वेबसाइट बनानी है, so we will have to write the markup at first. After that we will have to write the CSS for this website. Will have to tell him how this slider will look, and then there would be these images, there would be, after when I will hover my mouse over it, they will find the different text over this. So
we have done it using the HTML and CSS language. But then आपने देखा होगा, आप आज से पहले हम कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे. हर किसी को बहुत सारी जानकारी चाहिए होती थी कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए. ऐसे किसी को नहीं आता है. Not a no layman would have been able to access the computer if they are not professional, if they are not very proficient in that command line operating system. तो उसके बाद क्या हुआ, उनको लगा कि हमें लोगों के लिए आसान बनाना है. We have to make it easy for the people so that they can access the operating system or maybe the computer. तो विंडोज से क्या हुआ, विंडोज से हमने क्या बनाया, हमने बनाया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. जो हर कोई जो क्लिक करता है, कहीं पे भी क्लिक करेगा, वो उसको दूसरे सॉफ्टवेयर पे लेके जाएगा. उसको समझ ही नहीं आता है कि हाउ इजीली इट्स हैपनिंग इन द बैक एंड. पीछे से अब अगर हम देखेंगे तो पीछे से एक कमांड ही चलती है जब हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं. जैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूंगा, यहाँ पे अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, व्हेन आई एम ट्राइंग टू प्रेस ऑन एनी एलिमेंट देयर, इट विल टेक मी टू दैट एप्लीकेशन. पीछे से एक कमांड ही रन होती है जो हमें लेती है किसी एप्लीकेशन पे. तो मेरा घर समझाने का ये है कि हर कुछ बहुत मुश्किल होता है. तो ऑब्वियसली जो इन चीजों पे काम कर रहे होते हैं, उनको समझ आया कि हम लोगों को ये कैसे इजीली वो कैसे वेबसाइट बनाए, ताकि कोई HTML और CSS कोडिंग अगर किसी को आती भी नहीं होगी, वो एक वेबसाइट कैसे बनाएगा. उसके लिए एक कंसेप्ट आ गया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में उन्होंने क्या करके रखा, उन्होंने पहले ही एक स्ट्रक्चर बना के रखा. एक डिजाइनर बैठा, कंटेंट एक्सपर्ट बैठा, उन्होंने एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बना के रखे और ऐसा हमें एप्लीकेशन दिए जिस हिसाब से जहां पे हम क्लिक करते हैं, हमें वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम एक वेबसाइट बना सकते हैं. if we will talk about one of the most popular content management system we have right now is the WordPress. So WordPress is like 33% of the website we have on the internet are currently being created by the WordPress. One of the famous website I can talk about is the Times magazine. So their website has been created using the WordPress. So WordPress एक content management system है. Content management system as the name implies, इसमें हम जो कंटेंट होता है हम वो मैनेज करते हैं. अगर अब जैसे मैं बात करता था कोड रीयूजेबिलिटी, अगर किसी ने ऑलरेडी कोई टेम्पलेट बनाया है, अगर ऑलरेडी कोई चीज काम करके रखा है, then it's very easy for the other people to copy that or maybe to follow those guidelines and create a website. At the end, everyone wants to create a website, but then if we will ask them to learn HTML and CSS in detail, it will take them time, and obviously it does not happen in couple of minutes that you will try to learn HTML and CSS in 2-3 days and you can create a website. It doesn't work that way. And to eliminate this problem, they come up with this content management system idea. They created the management systems where they give access to the users and then they log into their content management system. They take a predefined theme and then they start with that particular theme. तो उनके पास एक थीम रहती है, हम कुछ चेंज थीम में करते हैं, हम अपने हिसाब से. अभी बहुत सारे पेज बिल्डर्स आए हैं. पेज बिल्डर से हम क्या करते हैं, आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी, अभी के जमाने में हम अब अगर बात करेंगे विक्स की, विक्स एक बहुत ही बढ़िया पेज बिल्डर है. उससे वो हमें क्या फायदा देता है कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी से, हम ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं. सो if like I talked about WordPress, that is one of the popular this content management system we have. और उसकी एक खासियत ये भी है कि हमें वो कस्टमाइज करने देता है. बहुत प्रिविलेज हमें मिलती है, बहुत सारी चेंज हम एक वेबसाइट में
ला सकते हैं. So this is one another content management system. It's called Wix. So इन्होंने क्या किया, इनको जो जो चीजें लगी, एक इंसान को जरूरत पड़ सकती है, एक वेब डेवलपर को जरूरत पड़ सकती है, इन्होंने वो सारे एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे लाया, वहां पे उनको रखा, वहां पे वो फीचर्स अपने यूजर्स को दिए, जिससे यूजर्स को बहुत फायदा हुआ, उनको बहुत इजी आया. जैसे अब अगर मुझे विक्स में 2 मिनट के लिए वेबसाइट एक बनानी होगी, all I have to do is I have to press the create new website. See how fast it can create a website for me. And using HTML and CSS, if we will go here, just give me a second. Share screen. And we have to conclude also. We are running out of time. Yes, yes, yes. I won't take much time now. So if I have to create a website using HTML and CSS, I have to write each and everything I want to be on a website. So I have to create a website from the scratch, and you will need to put each and every information. You will have to take care of the structure when creating a website. And then you will have to write a CSS. So if you are creating a website from scratch, it will take you an experience. It can take maybe 3 to 4 days to create a professional website. So basically एक डिजाइनर देगा हमें एक टेम्पलेट, PHP टेम्पलेट, हम उसको HTML और CSS में कन्वर्ट करेंगे और वेबसाइट की शक्ल देंगे. That, see here, if we will see PHP templates, जो डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो PhD बनाते हैं. ऐसे वो PhD बना के देंगे. इससे क्या हमें फिर डेवलपर का काम क्या करना होता है, they will have to replicate that image and they will have to convert that image into HTML and CSS code and create the same design. That's why I was saying that we have to take care of each and every pixel. So what I am saying is that while creating a website, we have to write each and everything. We have to create a menu, we have to create a slider, we have to create one section, we have to put a text in the left, we have to put an image in the right, and then we have to create one more section. We will put 3 columns in this, we will put one section there, one section there. So we are taking care of each and every pixel which is on a website. But when it comes to these content management system or website builders, I can say, this is, 1 second, I will stop share and show you the magic of Wix. See, so we were talking about the content management system. Here, if I am pressing this create a new website, it will populate. It will ask me, what are you looking to build? Obviously, if I will say him that I want to say I want to create an online store, I have a shop in my home, I want to create an online store for this. So it will give me 2 options. Either I will have to answer a couple of questions. He will try to make himself understand what kind of an website I'm looking for. So he will provide me the questions accordingly. So I will answer the questions and they will create a template for me. Or else we can make use of website editor, or what we call as a website builder. तो इसने मुझे प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स दिए. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कोई भी टेम्पलेट जो मुझे अच्छा लगता होगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ मैं ऐसी वेबसाइट चाहता हूँ. Obviously you will have the access to make change when you are choosing this particular theme. So मैं यहाँ पे edit करूंगा and this website is ready. See how fast they have made it. If you have to create a website from scratch, you will have to write the code from scratch, HTML and CSS, which is very important, because if you are working with these content management systems, you will not be able to create a good website if you do not understand the structure of an HTML website, the properties of the CSS, or a number of things which are related to HTML and CSS. See, my website is
almost ready. So right now it will give me how many pages I have here. I can make a lot of change in this website. I can create it as per my needs, and then all I have to do is I will publish it, and it will show me what kind of a website. So but I was trying to make you understand here is that the technology is evolving very fast. And then right now, even if someone who is not technical, even if someone who does not have the knowledge about HTML and CSS, they can easily create a website. So talking about one another content management system which is very famous is the Shopify. So what Shopify does is that uh, they have these predefined online store templates. We will select a template, we will upload the items, and we will see our website running in 1 or 2 days. So it's very fast. Technology is evolving very fast. So if you want to learn these skills, it's not something you will say that I want to learn and you will learn. You have a lot of content available. You have a free content available on internet. There you will be able to find you. If someone has the motivation to learn the web development, he can simply go to the W3 Schools website. There he will find most of the things about the HTML and CSS. And it's not a rocket science. You can learn HTML and CSS very easily. That's because this is considered to be a very easy language. But make sure that when you are talking about website, you have to take care of two languages, HTML and CSS. With HTML, you put the content on a web page, the image, the text, the videos, the audios, or anything you would like to see on a website. And with CSS, you take control of those elements you have created using the HTML. And after that, you select those elements, and then you make formatting change to that th- those particular elements, which will, and ultimately you will have a website the way you want. So if anyone has any question, if we would love to discuss anything you have in mind. If anyone is making any website right now, I do not know if someone is well, if someone is very good with templates, or maybe someone is good with the HTML and CSS. I'm here to take the questions. Please go ahead. You can Yes. unmute कर सकते हैं आप सारे अपने mics को. You can unmute it and then speak out directly. क्योंकि हम last के कुछ minutes बचे हैं. Okay, someone has pasted a question why your website made by using HTML is showing not secure, and second one which is well designed is showing secure. There is nothing like that. So Naksha was talking about SSL. SSL एक protocol है obviously. See, अगर आप की वेबसाइट पे कुछ ट्रांजैक्शंस आप करते हो, आप चाहते हो कि जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो भी सर्वर को डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेरी वेबसाइट से, वो encrypted जाए. For that reason we make use of the SSL. SSL makes sure that the data which is being sent to the server is encrypted, and no one in between is able to read that data. And talking about my website, yes, I have included SSL certificate in that. But if you will type the HTTP :/innoception.in, or for that matter any other website, you will still be able to see the unsecured website. But you have to make sure that you redirect that unsecured secured website to the secured one, so that if any user is coming to your website, they will feel they will not feel that the content we are providing, the forms we are submitting on this website, or maybe the details we are submitting on their website is being Content is basically, the kind put of a in a. contained, yeah. Yes, So yes, nothing is not absolutely. disclosed. Yeah. Yeah. I mean, it's So really fun any to know these things. Basically, all the in this brief session. So it was really interesting to know that the use of HTML, use of CSS
and we've already gone through this, some examples in the previous sessions. ये है कि I mean we have to try. आज हमें इनायत साहब ने, so he shared some websites with us. What was the first one? What was that? W3 school? W3 schools, yes. Okay. W3 स्कूल से हमें सारा कंटेंट मिलेगा. कंटेंट किसमें? HTML के टैग्स वगैरह या CSS में या क्या है? This one. Another thing is that WordPress का उन्होंने बता दिया, and there was one more. What was it? Wix. The last one. Wix is a content management system, or what we can say is it's a website builder which will give you access to create website using these drag and drop facilities, so that if someone is not aware about HTML and CSS, they can create the website using the drag and drop feature. And believe me that with these website builders, I have tried this Wix. I'm currently creating one website, online shopping portal using Wix, and I really was impressed to see the features they are giving. So you can create an impactful website using these website builders. And if we talk about the WordPress, there you have the website builders as Elementor. We have the other website builder as DV. Those are some of the website builders which will help you create the website using the drag and drop facilities in WordPress. Wonderful. I think that let's conclude. In case we have more questions, we can post it directly on the WhatsApp. Yes, why create two different languages for content of a website? How to arrange display it? Why not have a single language that includes both the tags? So the reason here is that these two languages are totally different. There is no similarity between these two languages. The HTML is used to put the markup on a website, and then CSS is used to make the styling change or make the formatting of that website. So for that reason, HTML is different, through which we include text, video, audio, or maybe we need to put the any other content or anything else. And using CSS, you make change to that, those tags you have included through HTML. A personal question, if you may, why you switched your career from website developer? This is some maybe because we do not have those many opportunities in Kashmir. This is one of the. And this is one thing. Another thing is that I'm sure that there are a lot of questions, about the future prospects. And there are some, many questions will be coming up. So better ये कि we will, shooting it in the WhatsApp group. तो अभी हम conclude करते हैं. I'm sure कि आपकी mothers, आपके fathers आपको call करेंगे. इस वक्त खाना नहीं खाना आपको. ठीक. All right, if someone will have any question, I will, my name is Inayat Hussain. You can maybe ping me. I will try to help you guys. Maybe someone would need any help with, maybe I can give a dummy website so that you can work on those websites and make some change. I can give you access to the hosting service provider. There you can place your files and make change to those files on a live server. That I can help. And if anyone has, I know that this session was not something where you have learned these HTML and I was trying to make you understand how we use the HTML and CSS. And obviously, if we have to learn HTML and CSS, we need to learn these things very detailed. That way we can have more sense about these. I have a lot of questions, but time doesn't permit. You can put the questions in the WhatsApp. I will try to answer those questions. Wonderful. Thank you so much, Inayat sir, for sparing your time, and shukriya Thank you so for much. everyone for participating. Thank you. Thank you so much, guys. Take care of yourself. Assalamu alaikum. Walaikum salam.